Namaskar. I'm Dr. Anup Kathat, Alt English, GHSS Kanbua Kalsi Dehradun. In today's English teaching session, we are going to discuss and enjoy a beautiful poem written by John Berryman. The poem is The Ball Poem, and it's all about an attachment of a child with his belongings. So, let's begin with the poem. So, dear learners, welcome again with a new session from your textbook First Flight, subject English, class 10. The Ball Poem, written by John Berryman. Areas to be discussed today we have about the poet, thematic approach, introduction of poem, recitation of the poem, reading and explanation with text, poetic device or figure of speech. We will summarize the poem, vocabulary drill, and at last concluding key points. So, coming with the section about the poet, John Berryman. Here is a picture of John Berryman. October 25, 1914 to January 7, 1972. So, this is his living period. Some key points about John Berryman, about his background, about his specialty is he was American poet and a scholar, key figure in the confessional school of poetry. His best known work is the Dream Songs. Now coming with some popular works of John Berryman, we have Poems Collection 1942, The Dispossessed 1948, Stephen Crane 1950, Homage to Mistress Bradstreet 1956, 77 Dream Songs 1964, Berryman's Sonnets 1967, His Joy, His Dream, His Rest 1968, The Dream Songs again 1969, Love and Frame 1970, Delusions etc. of John Berryman 1972, Recovery 1973, and The Freedom of the Poet 1976. These are some popular works. Now coming to the another section, theme. What is the theme of the poem, The Ball Poem? It's about a childhood. In a sense, grief of loss, बचपन, भोला भालापन, दुख कुछ खोने का, loss. Because there is a deep attachment of any child with his belongings. And when he lost any of his belongings, there is great grief in his heart. So it's all about grief of loss, nostalgic feeling of childhood days. So poet is considering himself too as a child when he was a child. So all the things which are happening in front of the poet and is feeling that moment of his own childhood as he saw that boy who lost his ball. Learning through experience, अनुभव से सीखना, यही इस कविता का एक मूल भाव है. The growth of mind, and with the growing age, there will be growth of mind. The child will experience the feel of loss and will overcome with the loss and will imbibe, consider, experience the thing that it is
external, which comes, that goes. Feel of responsibility. On the top of it, he will feel a sense of responsibility that we have to be responsible for our belongings, the things which are connected to us, related to us. जो भी चीज़ें हमसे connected है, related है, हमें उनकी responsibility लेना सीखना होगा। तो एक जिम्मेदारी का एहसास कराती है कविता और इसका अनुभव कराती है कि हमें responsible होने के साथ साथ ये समझना भी ज़रूरी है कि जो चीज़ें आज दुनिया में है वो कल नहीं रहेंगी। There is a circle of life. After theme, we will discuss introduction of poem. A boy is the central character of the poem. एक छोटा लड़का जो इस कविता का central character है। The poem deals with innocence of the boy. पोएम में क्या दिखता है? एक भोला भालापन, सीधापन, एक बच्चे का। The experience of loss, क्या दिखता है यहाँ पे? कि वो लॉस, कुछ खोने का जो अनुभव करता है, वही उसको टीच करता है टू डील विद द रियलिटी ऑफ लाइफ, ताकि वो जीवन में वास्तविक चीज क्या है उसका वो सामना कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस ऑफ लॉस। द फील ऑफ लॉस और सैडनेस, जब लॉस होगा तो सैडनेस, एक दुख उसके अंदर आएगा, मेक्स हिम टफ, और इससे वो स्ट्रांग बनेगा, टफ बनेगा टू फेस द अपकमिंग फेजेस इन लाइफ, और जीवन में जितने भी पड़ाव आने वाले हैं उनका सामना करने के लिए उसके अंदर एक मजबूती बहुत जरूरी है। सो इट मेक्स हिम टफ। इट इज ऑल अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और कविता किसके बारे में बताती है? जिम्मेदारियों के बारे में, दैट वी हैव टू टेक एज द एजेस पास ऑन। जैसे उम्र गुजरती है हमें जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत ही जरूरी है। द अटैचमेंट विद आवर बिलोंगिंग्स, अपनी चीज़ों से जो हमारा जुड़ाव है, लगाव है, इज नेचुरल, होता है, स्वाभाविक है होना। वी हैव टू फेस ईच फेज ऑफ आवर लाइफ एज टाइम गोज ऑन, हमें अपने जीवन का हर पड़ाव उसका सामना करना पड़ेगा जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, उम्र बढ़ती जाएगी। अ बॉय विल बिकम ए मैन, एक लड़का जो एक आदमी बनेगा, वन डे, एक दिन, हैविंग ऑल एक्सपीरियंस ऑफ लॉस एंड सॉरो, जिसके अंदर सारा एक्सपीरियंस होगा खोने का, दुख का, एंड फाइनली विद ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, और अंततः उसके अंदर एक जिम्मेदारी का जो एहसास आएगा वो ही उसे आगे बढ़ाने में मदद करेगा, विल ड्राइव हिम फॉरवर्ड टू फेस अदर phases of life. The poet describes all about learning and learning. और कवि का जो मूल भाव है कविता में ये समझाने का है रीडर्स को कि हमें जिंदगी के हर स्टेज पर, हर उम्र पर सीखना है और सीखते ही चले जाना है। So that is also called experience of life. तो लर्निंग एक एक्सपीरियंस बनकर के जब हमारे सामने आता है तो हमें आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिवली वो ड्राइव करता रहता है और प्रेरित करता रहता है। सो एक्सपीरियंस बिकम्स आवर इंस्पिरेशन। सो इट्स अबाउट लॉस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द लाइफ। सो इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द पोएम, द बॉल पोएम। फर्स्ट वी विल रीड द टेक्स्ट, after that we will explain it accordingly. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. He senses first
responsibility in a world of possessions. People will take balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. So the lines by John Berryman. Let's come to the text again, the explanation. What is the boy now who has lost his ball? अब उस लड़के की स्थिति क्या है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है? What is he to do? अब वो क्या करता है? या इसके बाद अब वो क्या करेगा? मैंने इसे जाते हुए देखा. The poet says, I saw it go. इसे जाते हुए देखा. It is ball. मैंने बॉल को जाते हुए देखा. मैरिली खुशी खुशी बाउंसिंग उछलते हुए डाउन द स्ट्रीट गली में नीचे एंड देन मैरिली ओवर. मैरिली बाउंसिंग, मैरिली ओवर, उछलते हुए गई खुशी खुशी और ओवर आंखों से ओझल हो गई. देयर इट इज इन द वाटर, और पानी में जाकर के गिर गई. देन इट इज ओवर. इन दिस वे हिज बॉल वाज लॉस्ट. द बॉयज बॉल वाज लॉस्ट इन द वाटर. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल. कोई यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं है कहने का कि दूसरी गेंदें भी तो हैं. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. इस इंसिडेंट ने उसको हिला दिया, शेक कर दिया, और एक ग्रीफ, एक सौरो उसके अंदर क्या भर दिया? दुख भर दिया. फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड. और वो खड़ा होता है बिल्कुल जटिल कठोर रूप में, ट्रेम्बलिंग कांपता हुआ, स्टेयरिंग घूरता हुआ जहां उसकी बॉल गई थी, डाउन नीचे की तरफ. कहाँ गई थी? ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर. और सामने ही आगे जाकर के हार्बर है, द पोर्ट, जिसे आप बंदरगाह कहते हैं, और वहाँ कहीं पानी में उसकी बॉल गिर जाती है. वेयर हिज बॉल वेंट. वहाँ वो स्टेयरिंग घूरता हुआ देख रहा है, कांपता हुआ, रिजिट बिल्कुल कठोर खड़े होकर के, और ग्रीफ फिक्सेस उसके अंदर जो दुख भर गया है इस सिचुएशन से, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बिलोंगिंग, हिज अटैचमेंट, दैट इज अ बॉल. पोएट कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड, आई वुड नॉट, मैं उसके इस परिस्थिति में कोई दखल नहीं देना चाहता, इंट्रूड करना चाहता. ए डाइम, डाइम इज अ करेंसी ऑफ यूएस, a 10 cent currency means price of that ball, a dime. another ball, एक डाइम से दूसरी बॉल आ सकती है, लेकिन वो भी क्या है? वर्थलेस है, उसकी भी कोई कीमत नहीं, बिकॉज जो अटैचमेंट उस बॉल से था दैट इज लॉस्ट एंड ही वांट्स ओनली दैट बॉल अगेन. ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी. इस परिस्थिति के बाद, इस घटना के बाद वो सेंस करता है, महसूस करता है सबसे पहले जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का उसके अंदर एक भाव आता है. बिकॉज आफ्टर लॉस्ट उसको एहसास होता है कि मुझे इसकी देखभाल करनी चाहिए थी, सुरक्षित रूप से उसको खेलना चाहिए था, तब ये नीचे नहीं जाती. तो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर इनसाइड हिम इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस. अधिकार की इस दुनिया में जहाँ पर हम लोग अधिकार जमाते हैं हर चीज़ पर, उसका फील उसके अंदर आया. अगर मेरी चीज़ थी तो मुझे इसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होना था. पीपल विल टेक बॉल्स. लोग गेंदें खरीदते हैं और गेंदें खो जाती है हमेशा. लिटिल बॉय और छोटे लड़के गेंदें हमेशा लोग लेते हैं और खो जाती है. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. और वापस कोई इसको खरीदता नहीं है. मनी इज एक्सटर्नल. जो पैसा है, जो धन है दुनिया में, ये एक्सटर्नल है, ये आता और जाता है. इट्स नॉट परमानेंट. ही इज लर्निंग. द मेन थीम, वो सीख रहा है. बच्चा उम्र के साथ, इंसिडेंट्स के साथ, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज. हालांकि उसकी आंखों के पीछे जो निराशा है, उसके साथ साथ वो डेस्परेट आइज के पीछे लर्निंग, सीख रहा है. द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. जो मीनिंग है खोने का, जो अर्थ निकल के उसने समझा खोने का,
हाउ टू स्टैंड अप, और उसके बाद जीवन में कुछ खोने के बाद फिर ऊपर उठ करके आना, हाउ टू स्टैंड अप, ओवरकम, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जो हर एक आदमी को एक दिन सीखना है, एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और कई कई दिनों तक सीखते रहते हैं कैसे स्टैंड अप होना है, कैसे खड़ा होना है, परिस्थिति से, कंडीशन से हम कैसे निकल करके ऊपर आएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट these lines, the gist of lines that we have to be responsible for our things, our belongings, the area we feel all about the possession. तो हमें लॉस को भी समझना है कि लाइफ में लॉस होता है और इससे उठ करके हम कैसे आते हैं. If you link it with your relations, your relatives, nothing is permanent in this life. Who takes birth, the death is eternal. So the journey of life and death is all about a sense of understanding. जीवन में जिसका जन्म होता है उसकी एक दिन मृत्यु भी निश्चित है. तो ये सेंस उसके धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी बच्चे की, वो उसको भी फील करता जाएगा और समझता जाएगा कि जो लॉस का जो फील होता है, उसके बाद जो रेस्पॉन्सिबिलिटी का फील होता है, जो पोजीशन की बात कही है, अधिकार की बात कही है, दुख और खुशी के बीच जो एक दायरा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. सो इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ अ बॉय हु लॉस्ट हिज बॉल, एंड आफ्टर लूजिंग हिज बॉल ही इज नाउ feeling that sense of responsibility. Beautiful lines by the poet John Berryman. So after reading recitation of the poem, explanation of the poem, we will now go through the poetic devices coming in this poem. Rhyme scheme. There is no rhyme scheme in this poem. It is free verse. बिल्कुल free इसका verse, free इसका style है. Assonance, sound का जब हम बात करते हैं, sound का कहाँ दिखाई दे रहा है poem में? ओ का जो साउंड आ रहा है, बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट, यहाँ पर ये साउंड हमको दिख सकता है, एजोनेंस. एनाफोरा, रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड इन मोर देन वन लाइन, दैट इज एनाफोरा. व्हाट इज, व्हाट जो शब्द आ रहा है रिपीट हो रहा है लाइन में, व्हाट इज द बॉय एंड व्हाट, ये हमको रेपिटेशन मिलता है. अगेन एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ एनी लेटर. द यूज ऑफ साउंड बी एट द बिगिनिंग, शुरू में बी का जो यूज हुआ है, टू कंसेक्यूटिव वर्ड्स, buys a ball bag, buys ball bag, B यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है, दिस इज एलिट्रेशन, जिसे आप अनुप्रास कहते हैं. तो these are the poetic devices used in the poem. Now let's coming to the summary of the poem. The poet gives details of a little boy who has lost his ball. He was playing with his ball. The ball bounced from his hand and went into the nearby harbor. The poet says that his sight of the boy losing his favorite ball and explaining his reaction. He further says that the boy was helplessly looking into the water where his ball had gone. He was in sorrow and was trembling with fear. He kept watching harbor where his ball had sunk. The poet says that he could support him, that he may get new balls, or he could also give him some money to buy another ball, but he stops himself from doing so because he thinks that the money may bring a new ball but will not bring the memories and feelings attached to the ball which is lost. He further says that the time has come for the boy to learn his responsibilities. Here the poet wants to say that now the boy will learn the hard times of life, the lesson of accepting the harsh realities of life, that one day we will lose our loved ones and our loved belongings. The poem is summarizing all about loss and responsibilities, taking a central character as a boy who was playing with his ball and suddenly he lost his ball. Now the feel of sorrow, the feel of grief inside him makes him rigid, trembling, staring the ball when it is bouncing and bouncing and over to that harbor in the water. Now what about the
situation at the time the boy is feeling inside him. Now onwards, he has to be responsible for his belongings, for his things, that he will not repeat this activity again, and the sense of responsibility, the sense of loss, and the feel of hard times, face the realities of life, loss of belongings, loss of loved ones, and it's all about that sense which he is feeling now with the time that is going on, with the age that is growing. He will be a man one day, and all the things, all the experience will teach him that how to face with the upcoming incidents in his life. So dear learners, as we have gone through the theme, the introduction of the poem, that there is a sense of responsibility is growing inside a child about his belongings, and that feel of loss and the feel of growing age. And one day he will surely sense that feel of harsh realities in the life. When he will become a man, he will having all those experiences to face the upcoming events and incidents in life. After the summary, we will discuss a little about vocabulary drill. We have some difficult words like grief, sorrow, दुख, sadness जिसको हम कहते हैं, possession, owning things, हमारे पास जो चीजें हैं हम जब उस पर अधिकार जमाते हैं, that thing is possession, external, out of fee, which is not permanent, trembling, कांपना, शेकिंग जिसको कहते हैं हिलना, डर से, भय से, इंट्रूडर, इन्वेडर, दखल देने वाला, घुसपैठिया जिसको आप कहते हैं, पोएट कहता मैं इंट्रूडर का काम नहीं करूंगा, मैं उसके काम में दखल नहीं दूंगा, उसको फील करने दो, लॉस, डाइम, 10 सेंट यूएस में 10 सेंट लगभग 10 सिक्कों के बराबर, 10 रुपया का सिक्का समझ लीजिए आप लोग। एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज, जो ज्ञान है, जो मीनिंग है। हार्बर, पोर्ट ऑफ शिप, और बोट्स जहाँ पर शिप्स आते जाते हैं, उनका जो स्टेशन होता है, दैट इज हार्बर, जहाँ उसकी बॉल लॉस्ट हो जाती है। नाउ वी हैव कंक्लूडिंग की पॉइंट्स ऑफ द पोएम, द बॉल पोएम। ए सेंस ऑफ लॉस, व्हाट वी हैव फाउंड, ए सेंस ऑफ लॉस, उसके अंदर सेंस डेवलप होता है, लॉस का, खोना क्या होता है उसका अर्थ समझता है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, हमें जीवन में अनुभव से ही सीखना होता है। द लॉस ऑफ बिलोंगिंग्स इज नेचुरल एंड द ग्रीफ इज एज नेचुरल एक्सप्रेशन, और उसके बाद जो दुख होता है खोने का, उसके बाद जो दुख प्रकट होता है वो भी एक नेचुरल, स्वाभाविक हमारा प्रकटीकरण है। द सॉरो एंड हैप्पीनेस आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ, दुख और खुशी जीवन का एक भाग है। डेवलपिंग द सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस लॉस से, उस नुकसान से अंदर एक जिम्मेदारी का जो भाव जागता है, जो बढ़ता है। अगेन डेवलपिंग द वेज ऑफ लर्निंग, तरीके हम सीखते हैं आगे बढ़ने के। नाउ कमिंग टू सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर होमवर्क सेक्शन। Why does the poet say I would not intrude on him? क्यों ऐसा पोएट कहता है कि मैं उसके काम में दखल देता हूँ? Why he offer money to buy another ball? क्यों ऑफर करता है दूसरी बॉल खरीदने के लिए? ये क्वेश्चन आपके लिए है। So do it, describe it according to you. I would not intrude on him. मैं उसके काम में दखल नहीं दूंगा। क्यों? Why? Second, what does in the world of possession mean? अधिकार की इस दुनिया का क्या मतलब है? किस चीज के अधिकार की बात हो रही है? किस चीज के पोजीशन की बात हो रही है? What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? Try to explain in this in your own words. अपने शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे कि लर्निंग जो सीखना होता है लॉस से वो कैसा होता है। बॉल का एग्जांपल लेते हुए Write about your experience when you lost your belonging somewhere. कभी आपने अपना कुछ सामान कहीं खोया हो, कहीं लॉस्ट हुआ हो,
Then what was your experience? Write down in your notebook. Write a paragraph about your childhood memories. अपने बचपन की कुछ यादों के बारे में ज़रूर लिखें. Write about some beautiful childhood memories that you experienced. What are your responsibility as a student at a school? आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं जब आप स्कूल में एक स्टूडेंट हैं? What are your responsibilities? आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं? So this is all about the questions for homework. So the area we discussed, the points we have discussed in the poem about the poet, thematic approach, introduction of the poem, recitation, reading with the explanation, poetic devices, figure of speech. We have summarized, concluding key points, vocabulary, drill. So all the areas we have covered here. Hopefully you will go again through this video and will learn and understand. Thank you. So dear learners, hopefully you all have understood the gist of the poem as we have gone through the theme, introduction, summary, vocabulary drill, concluding key points, and the explanation of the poem written by John Berryman, a beautiful poem about a child with his attachment to a ball which is lost during the play. Now, the sense of loss and responsibility is equally growing inside him to understand the harsh realities of life in the upcoming days again. So, here poet wants to describe the growing age, the feel of sorrow and happiness as are the part of life. So dear learners, go through the exercise, learn the poem with the text, summarize it according to you, do exercises as we have given to you. We will discuss some new interesting topic again in upcoming videos. Till then, take care, spread happiness. Thank you.